Last time we did these things, now we have done these things actually. Send your answers on my WhatsApp. Done, guys. Iram, Madiha, Rabah, Shahid, and Fahad. Yes, Iram, done. Sorry. I don't know how to do this. Why? Why you don't know, Iram? I have not watched the previous lecture. Why you have not watched the video? Tell me. आना चाहिए ना आपको. If you don't attend the classes, you have to watch the lectures. What about you, Madiha? Sorry, I can't hear you. Can you please speak loudly? So I don't remember. I trying to okay. You were present in the last lecture, yes or no, Madiha? Yes, I was. So, Miss Shahid, very good, correct. Madiha, please पढ़ाई start कर दीजिए. इतना time हो गया है. Rabah, what about you? You were also present in the last lecture, right? Yes, Rabah. The answer I joined late actually. अच्छा. I will wait 2 more minutes. Send your answers and then I will be done. We'll move on to the next topic.
Okay, Madiha. See, so in the first question, we are adding H2O in the presence of acid. So it will attach to the carbon atom which is having less number of hydrogen. That means this carbon atom will attach OH, and the hydrogen will be attached on the other carbon atom. In this case, when you have BS3, I will attach the OH on the carbon with more number of hydrogens, and again here I'll attach the OH in the carbon which is having less number of hydrogens. Write this down. And those who are already done, please write the topic. Second, from carbonyls. In bracket, you will write aldehyde and ketones. Okay. So I hope everyone has written this down. Now please write from carbonyls and number A. So there are a few methods of preparation from carbonyls. First is reduction of aldehyde and ketones. Reduction of aldehyde and ketones. No matter whether you have aldehyde or you have ketones, in both the cases, you are going to have carbon with a double bond oxygen, and this carbon will be attached with some different groups. Now, when I add a reducing agent here, it will reduce this carbon and hydrogen. What is happening here? In this case, carbon will be attached with a hydrogen atom. Oxygen will also be attached with a hydrogen atom. So what will happen? I have carbon, the two groups as it is, will be attached with hydrogen, and the carbon oxygen pi bond will break, and oxygen will also get a hydrogen atom OH. So this is aldehyde or ketone, and this is what alcohol. First of all, we'll see the reduction of aldehyde, then reduction of ketones. Please write. First of all, write for the both of them, aldehydes and ketones, aldehydes and ketones. Can be easily converted to alcohol using suitable reducing agent. Using suitable reducing agent, such as, now what are the reducing agents that we can use? Please write number 1, catalytic hydrogenation. So what is catalytic hydrogenation? You have H2 in the presence of nickel or palladium or platinum. Okay, so any one of these you can use. You can use hydrogen with either nickel or palladium or platinum. Second is LiAlH4, that is lithium aluminium hydride. शाबाश, थोड़ा बाद में आप ये कीजिएगा, अभी इसको लिखिए प्लीज, जो लिखा हुआ उसको कंप्लीट कीजिए.
थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, जो लिखा हो उसको कंप्लीट कीजिए. राइट, नेक्स्ट NaBH4. This is sodium borohydride. And write the fourth one. Sorry, this is NaBH4. Okay. Sodium in the presence of ethanol. So you'll see this like this. Sodium in the presence of ethanol, that is C2H5OH. Travis, please take a screenshot and then write for this. यहाँ से लिखना आप start करेंगे. From carbonyls you will start writing. You will not write the previous part. आप just screenshot ले लीजिए. I'm waiting for a few seconds. What, sir? Done na? Screenshot taken. Please write this from carbonyls. आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से शावेज. From carbonyls, please start writing. Completed, शावेज? सब कुछ लिख लिया आपने? चलिए. No. Please see here, guys. All of you done, na? Is there anyone who is still writing? Shahid, Shavez, Madiha, Rabah, Iram, anyone still writing? No. Okay, fine. So we can use any one of these reducing agent to convert aldehyde or ketone to alcohols. Now, first of all, let us see aldehyde. So aldehyde will have carbon with a double bond oxygen, and it will contain two groups. It will contain a R group and it will contain a hydrogen. So this tells you that it is what it is, an aldehyde. This is what aldehyde. Now, what will happen if I add a reducing agent here? If I add a reducing agent, any one of the above, hydrogen is going to attach on the carbon atom, and one hydrogen is going to attach on which carbon? Oxygen atom. So now this will become R. This carbon had already a hydrogen, it will get one more hydrogen, so that means it is CH2 attached with OH. क्या मिल गया आपको यहाँ पे? What you have got here? You have got a primary alcohol, 1 degree alcohol. Primary alcohol, 1 degree alcohol. What happens if I use ketone? R bonded to carbon atom, which is having double bond with oxygen, and some another R dash. So again, if I use any reducing agent, then this hydrogen is going to attach on carbon and one hydrogen is going to attach on oxygen atom. What is going to happen now? Now you are going to get R bonded with carbon with one hydrogen, bonded with R dash, and this carbon atom will have OH. This pi bond will break. So in this case, you are getting secondary alcohol. You're getting secondary alcohol, that is 2 degree alcohol. So from here, we can write a note. Aldehydes give 1 degree alcohol on reduction. Second, we can write ketones give 2 degree alcohol on reduction. Also एक तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा. In both the cases, number of carbon atom will remain same. Is right, number of carbons atoms remain same.
There is no change in number of carbon atoms. Okay, please write this down. Let me know once you're done. कितना स्क्रॉल अप करना है? लिखिए। जी कौन आया भाई? So see, in this reaction, simply what you need to do, जहां पे C double bond O हो, wherever you have C double bond O, replace it with COH. Okay. So होना क्या है इसमें? All these reactions are very simple. Aldehyde and ketones with reducing agent, है ना? To give alcohol, it is very simple. What you need to do is, just a second. Replace double bond O with OH. Okay. And add one hydrogen to carbonyl carbon. ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा? CHOH. ठीक है, बाकी तो जो भी दो ग्रुप्स लगे हैं वो यहाँ पे लगे रहेंगे. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. हाँ या ना बताएं. मदीहा, तारीफ, रबा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे तो प्लीज बोलिए. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? No, sir. वेरी गुड. राइट अ क्वेश्चन. Write major products for following. Number 1. Now, what will be the product here? Please see, guys. देखिए, CHO. What is CHO? CHO is nothing but it is an aldehyde group. So aldehyde will, you're not going to write aldehyde, rather you'll write alcohol, and the number of carbon atoms will be same. है ना? There are a few things that you have to always remember. Number of carbon atoms will remain same, है ना? So you have hints to write a reaction according to the reactant which is giving you. 1, 2, 3 carbon atoms. So you write CH3, CH2, and a carbon atom. Now the oxygen will become OH. इसमें कितना हाइड्रोजन आ जाएंगे? पहले से एक हाइड्रोजन था, एंड नाउ यू विल गेट H2. गॉट दिस गाइस? यस और नो? प्लीज टेल मी. व्हाट अबाउट अदर्स? रबा, मदीहा, आप लोगों को यहाँ पे सिमिलैरिटी नजर आ रही है, नहीं आ रही? प्लीज सी हियर गाइस, they are never going to show you always you have C double bond O. Okay, you have to know that CHO, when we write CHO, I have something like this. Got this? Raba, Madiha, Shawiz, Fahad, Tarif. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. What about you guys? Madiha समझ में आया? Yes, sir. Okay. ऐसे घबराना नहीं है फिर, ठीक है? CHO आपको पता होना चाहिए. ये नहीं कि सर आपने बोला C double bond होगा, C double bond तो यहाँ पे नहीं, C double bond है, वो दिखाएंगे नहीं. They may also give you something confusing like CH3, CO, CH3.
NaBH4. You should know that this CO is actually C double bond O, because carbon is having what? Two bonds with carbon and carbon, so there will be double bond with oxygen. Now what will happen? CH3 as it is. This carbon will get one hydrogen, है ना? एक भी hydrogen नहीं था, एक hydrogen मिल गया, and then here we will have CH3 and this carbon will get OH. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. No. The other bond line structures are going to be very easy. Always count the number of carbon atoms once you have made the products. Write this down. Let me know once you're done. Send your answer on my WhatsApp. Yes, about third is correct, fourth is correct, fifth is correct. Yeah, sixth is also correct. Very good. Right, first is correct, second correct, third is third is correct, fourth is correct, fifth is correct, sixth is not correct. Shahid, please see in the sixth one what is wrong. Third one is correct, Ram. Fourth is also correct. Fifth is also correct. Sixth one is wrong. Please see what is wrong in the sixth one. The carbon which is having double bond will get the OH. Okay. So please see wherever you are attaching the OH, क्या वहां पे पहले double bond O था? Please ask yourself whether there was a double bond.
तारीफ वेटिंग फॉर यू प्लीज. तारीफ एंड मदिहा प्लीज सेंड योर आंसर्स. मदिहा जल्दी भेजिए आप. I'll give you guys 2 more minutes. Madiha and Tarif, please send your answers. Madiha and Tarif, please send me whatever you have done. चलिए मदिहा का आ गया आंसर. नहीं मदिहा, बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत. आई मीन आप यू कंपेयर ना, आप कंपेयर कीजिए, क्या ऐसा कहीं पे हमने बनाया है जो आपने बनाया है? कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं? मदिहा प्लीज टर्न योर माइक ऑन. जी मदिहा, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए वहां पे? sir. अरे जोर से बोलिए प्लीज. No, sir. फिर आपने कैसा प्रोडक्ट बनाया? क्यों डबल बॉन्ड है आपके प्रोडक्ट में? ठीक है, गलती हो सकती है, लेकिन वो कम से कम आप कंपेयर तो कीजिए, सिंपल लॉजिक लगा के तो कंपेयर कीजिए. सेम चीजें जब लिख रहे हैं हम, डबल बॉन्ड कभी वो आ नहीं रहा है हमारे प्रोडक्ट में, तो आपके प्रोडक्ट में क्यों रहेगा डबल बॉन्ड वो? यदि आपको फिर सारी चीजें रखनी पड़ेगी. आपने जो बीच में इतना लंबा गैप किया है ना, उन सब चीजों का नतीजा है ये सारा. लास्ट क्लास भी रिवाइज करके नहीं आई हैं आप. प्रायोरिटी होती है हर चीज की ना. पढ़ाई अगर प्रायोरिटी तो आप करती, चाहे आपके घर वाले कहीं भी जा रहे हो, कहीं की भी पैकिंग करनी हो. So this carbon atom here, it is actually C double bond O and H. अब यहाँ पे this double bond O will get converted to what? OH. तो ये OH बन जाएगा. That's it. सर करना ही नहीं था यहाँ पे. Here you have double bond O. ये इतना आसान हमने यहाँ पे लिखा दिया. जहां पे दिख रहा है वहां तो चेंज आना चाहिए कम से कम. डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा, वो भी नहीं किया आपने. जहां पे ऑब्वियस की चीज है, जहां पे डबल बॉन्ड O है, ये तो बिल्कुल सिंपल था ना. जहां डबल बॉन्ड है उसको क्या कन्वर्ट कर देना? OH कर देना. यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, बस इसको OH कर देना है. That's it. Now, Aaron, tell me, did you get what's wrong in your sixth structure? सर सेंड तो मुझे करना. हाँ, फिर से भेजिए. शाहिद आप भी, शायद आपको गलती पता चली. यस शाहिद, यार सर जल्दी भेजिए. हाँ वेरी गुड एरन.
राबिया, आप अगर हालो एल्केन हालोरिन नहीं देखेंगी ना, जब तक आप उन सब मतलब दिख लिख के आपको, तो एक सेकंड गलत है शायद, COH हो ही नहीं सकता ना, CH2OH होगा. Rather make it like this, one carbon atom and then OH directly. When you are writing carbon, then you have to tell कितना हाइड्रोजन है, CH2 होगा, उसके बाद OH लगेगा. ठीक है. This carbon already had a hydrogen and one hydrogen will be there because of reduction. That is why it will be CH2OH. But in bond line structure, it becomes easy. You don't have to worry about the hydrogens. You just need to see OH यहाँ पे लगना चाहिए. That's it. अब ये नहीं आ रहा है आपको, आगे की चीजें तो और थोड़ी टफ है. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Done, sir. Right, next. Now, एक तो मेथड क्या है? This is one method. Reduction of aldehyde and ketones. The B part is, please write. Another way of using aldehyde and ketones is by reacting with Grignard reagent. Reacting with Grignard reagent. So what is the reaction? Please see. First of all, we will have a carbonyl carbon. That means any aldehyde or ketone. So aldehyde or ketone will have C double bond O. Please लोग समझेंगे यहाँ पे पहले, उसके बाद लिखेंगे. Leave your pens aside. No need to write here. Please leave your pens aside and listen. C double bond O. There will be a group attached here and there will be a group attached here. We don't know what that group is. Now, this is going to react with RMGX. This is going to react with RMGX, which is a Grignard reagent. Now, this R can be methyl, ethyl, pentyl, butyl, tertiary butyl, secondary butyl. It can be phenyl, anything. RMGX can be anything. Now, this R group here, it is going to have a delta negative charge because it is attached with a metal. And this magnesium ion, magnesium is a metal. Metal has a tendency to give electrons. That is why this R is going to get a delta negative charge. This carbon atom here, it is going to have delta positive charge because it is attached with electronegative element oxygen atom. And this oxygen will have delta negative charge. Now what's going to happen? This R group is going to attach on carbon atom. It is going to attack on carbon atom. So as soon as this R group, whether it is ethyl, methyl, phenyl, anything, that is going to attack on the carbon atom. Now carbon already has 4 bonds. It cannot make a 5th bond. That is why it will break the pi bond with oxygen. Now you are going to get a addition product, that is carbon with the 2 bonds as it is. We have attached a new bond with R, and this single bond oxygen is as it is. Now this single bond oxygen has MgX because oxygen will get a negative charge and Mg will get a positive charge because oxygen is breaking a bond and taking electrons. Mg is breaking a bond and losing electrons. Okay, so isko balance karne ke liye aapke paas MgX aa gaya. Then after that, in the next step, not in the same step, in the next step, when this product has been formed, you will add water. You will add water, H2O. Now for H2O, we can easily write HOH. The hydrogen will attach with oxygen and this OH will attach with Mg. So when hydrogen attaches with oxygen, what do we get? We have carbon, OH, right? Now it has 2 groups as it is and one more R group from the Grignard reagent. Plus you will get MgOH X. Now basically what is going to happen? You will have carbonyl carbon. Now अब ये देखिए double bond को दिखाएगा नहीं आपको. Please understand that. If you have aldehyde, for sure no one is going to show you where the double bond is. You have to know where the double bond is. Okay, so wherever the double bond is, you will identify the carbon atom which is having double bond. This will have some other 2 groups and the double bond will be with oxygen. It will be with oxygen. In the first step, you will have Grignard reagent, any RMGX, any alkyl group and any halogen atom. In the second step, you are going to have water. Now, what is the product? The product is going to be
everything same. That means carbon is as it is. These two groups are as it is. This oxygen is as it is. But in carbon atom, we will add the R group, and in oxygen atom, we will add the H. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं. What you have to do? What is happening here? Carbon oxygen pi bond is breaking. Carbon and R is forming. Carbon and R, और एक क्या form हो रहा है? Oxygen and hydrogen. These two are forming. That's it. आप लोगों को तो बहुत सिंपल चीजें याद रखनी है बस. What is breaking and what is forming. That's it. Write this down. Let me know once you're done, guys. I hope everyone is done writing. Please let me know if you are not written. Sir. No. Sir, the box. अच्छा. शाविज आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, बिकॉज आप कंटिन्यूअसली हैं ही नहीं क्लास में. Sir, I was disconnected, sir. Yeah, I understand that. आपके यहाँ लाइट अभी आना जाना कर रहा है. Understand, no problem. I can just scroll more up. नहीं अभी लिखने दीजिए. आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना. स्क्रॉल अप करने से कुछ ज्यादा क्लास के एंड में या तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना? ओके शाविज, क्योंकि अब तो बहुत पढ़ा दिया चल चुका है ना आपने जो मिस किया. Is everyone done? Please let me know if someone is writing. No. Please, again, leave your pen aside, and there are only a few cases. आपके पास सिर्फ कुछ ही cases हैं which is possible. You have carbon double bond O. One case is both of them are hydrogen. दूसरा केस क्या हो सकता है? Carbon double bond O. One of them is R and the other one is hydrogen. And the third case can be carbon double bond O. Both of them are what? R. Is there any fourth possibility? Yes or no? Please tell me, guys. Is there any fourth possibility? No. No, right? What about others? Please दिमाग लगाएं आप लोग, है ना? जो लोग बिल्कुल ऐसे mindless बैठे हो ना, please दिमाग लगाइए. Is there any other possibility? We can either have hydrogen or alkyl group. ठीक है? Is there any other possibility, guys? Please tell me. किसी का आंसर नहीं आएगा? ठीक है. Right, number one. RMGX, meaning Grignard reagent, plus formaldehyde. Here we have carbon with double bond O, and the two groups are hydrogens, plus any RMGX. I can write here like this. RMGX in the first step, in the second step, H2O. So what will happen?
these two hydrogens atom will be as it is. These two hydrogen atoms will be as it is. So carbon, the hydrogen atoms are as it is. The double bond O will become OH, and this carbon will get the R group from Grignard reagent. Now in the chat, you will tell me whether it is primary alcohol, secondary alcohol, or tertiary alcohol. Tell me in the chat, guys, whether this is primary alcohol, secondary, or tertiary. Hello, turn your mic on. Turn your mic on, Rabba. Rabba, turn your mic on. Mic on नहीं कर सकते आप. Sorry, sir, it's primary. I thought CH2 the hydrogen later. थोड़ा सोच के ना, ऐसा मतलब ऐसा आंसर कीजिएगा हमको हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना. फिर कौन पढ़ाएगा केमिस्ट्री आपको. मदिहा, आप बताएं, व्हाट इज दिस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. मदिहा. Sir, primary. Yes, very good. This is primary alcohol. That means it is 1 degree. ठीक है. Now what I can write? RMgX. Just a second. 1 degree alcohol. When you react this, then you are going to get alcohol. Okay, primary alcohol. Right, next RMgX. RMgX plus any other aldehyde. So any other aldehyde will have carbonyl carbon as it is. One of the groups attached will be R and the other group will be hydrogen. So I will take any other R dash MgX, meaning that this R and this R are different. Both of these alkyl groups are different. They can be same also, but they can be different also. They are not necessarily same. So what will happen? Both of these groups will be as it is. Carbon bonded to alkyl group, bonded to hydrogen as it is. And here it is having R dash, and double bond O will become OH. Now tell me whether it is primary, secondary, or tertiary. This is primary, secondary, or tertiary. Yes, Tarif, correct. Yes, Rabba, correct. Please answer correct, guys. Jaldi, jaldi. Yes, Shave is correct. Very good. Yes, this is secondary, है ना? 2 degree. Right, next. The third one. RMgX plus ketones. So we'll have R dash. Sorry. Suppose here you have R, and you're reacting with R dash MgX. H2O. So this carbon atom will have both the R group as it is. Oxygen will become OH, and we will add a R dash group from the Grignard reagent. And as you can see, this is 3 degree alcohol.
All if you done yes or no, please tell me. Done, sir. No, write a question. अब रेज योर हैंड। अरे शावेद, इतना देर से हम रखे हुए हैं यहाँ पे। जल्दी लिखिए शावेद, आप बहुत स्लो लिखते हैं आप। Yes, sir. Raise your hand if you don't know how to do this. First one, please raise your hand. अगर कुछ पता ही नहीं लग चल रहा है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, those who can do it, please do it. I will give you 2 minutes guys, 2 मिनट से ज्यादा नहीं इस सवाल के लिए। Sir, Yes, tell me Rabah. I sent you the answer in the WhatsApp. Okay. Sir, I'm correct, very good. इतना मार खाएंगे ना आप रबा, इतना मार खाएंगे आप। बीआर कहां से अटैच कर दिया आपने? बीआर अटैच हो रहा है कहीं पे, पहले देखिए। CH3. हाँ, 2 मिनट हो गए। मदिया, सेंड योर आंसर वॉट एवर यू हैव डन। मदिया, आप कम से कम ना इस स्ट्रक्चर को खोल के जरा लिख के भेजिए जरा। तारीफ, यस तारीफ, वेरी गुड, करेक्ट। मदिया, एटलीस्ट आप क्या कीजिए, इस ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, इसको खोल के भेजिए आप। हाँ ठीक है, शायद, वेरी गुड, करेक्ट। Write it properly, all the bonds, show the bonds of carbon atoms and send it to me. HCHO को खोल के लिखिए कम से कम। अरे हाँ ना, कुछ बोलिएगा मधिया आप, या फिर हम ये अज्यूम करें आप क्लास में नहीं है। Sir, I have sent you. हाँ तो कुछ बोलिएगा ना, इतने देर से हम आपकी बस आप ही को तो कह रहे हैं मधिया मधिया।
नहीं नहीं, एक सेकंड, ये MgOH वाला आप क्या, एक सेकंड, मध्य कैन प्लीज टर्न योर माइक ऑन। Yes, sir. ये क्या बनाया आपने, हमको समझ ही नहीं आया। दिस इज द प्रोडक्ट अधिया। Yes, sir. बताइए, आप पुराने प्रोडक्ट में कभी हमने Mg अटैच किया, ये बताइए आप। No. Sorry, yeah. फिर आपने, सॉरी, Sorry, sir. Yeah. कोशिश कीजिए फिर से, ट्राई इट वंस अगेन। आप यहाँ कंपेयर कीजिए ना, Mg के इधर क्या है, दिस इज हाइड्रोजन एटम है ना, ये X को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या अटैच हो रहा है, Mg अटैच हो रहा है, R डैश क्या अटैच हो रहा है ना, वो देखिए और फिर बनाइए फिर से प्रोडक्ट। आपने HCHO को आपने सही से बनाया है, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड। इसमें आप ट्राई कीजिए। हाँ शाबाश, सही है, वेरी गुड शाबाश। यदि आप ज्यादा सोचिए मत, जितना जल्दी हो सके ना, गलत गलत जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है बनाते जाइए आप, ठीक है ना, उसमें करेक्शन करते जाएंगे हम, बना के जल्दी से भेजिए, डोंट टेक टू मच टाइम। फर्स्ट इंस्टेंस में जो आपको समझ में आ रहा है वो आप कीजिए, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग, जो भी गलत गलत चीजें आप अगर सोच रही हैं, कंसेप्ट अगर गलत जा रहा है आपका, तो वो पता लगना चाहिए। बढ़िया हुआ नहीं हुआ? So one second. हाँ जल्दी भेजिए ना फिर। हाँ बस बहुत बढ़िया हो गया, समझ में आया कैसे करना है अब मदिहा? Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन हियर, अरे ये first क्यों आ गया, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, हियर this is actually hydrogen attached with carbon, hydrogen and double bond O, right? So this hydrogen carbon hydrogen will be as it is, this will become OH और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है, CH3 will be attached. Now write the second question. Second question आप लिख लीजिए। Let us suppose you have here ethyl. Ethyl क्या होता है, CH3 CH2 MgBr और वाटर, ठीक है। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे ऑल ऑफ यू गाइस, डोंट राइट एनीथिंग नाउ, ठीक है, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। व्हाट इज हैपनिंग, दिस CH2 is attached with MgBr, so this CH2 will attach on the carbonyl carbon, ठीक है। तो अटैचमेंट कहां से होगा, CH2 से होगा, so this carbon atom is as it is, एक हाइड्रोजन है इसके पास और एक CH3 है, राइट। दिस ऑक्सीजन एटम विल बिकम OH और अल्काइल ग्रुप क्या अटैच होगा, कार्बन पहले लगेगा CH2 और कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो इस तरह से CH3 जुड़ जाएगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, देखिए हम ये भी बता दे रहे हैं क्या क्या गलत आंसर्स लिखते हैं बच्चे। CH3 CHOH लिख दिया आपने, यहाँ पे सिर्फ CH2 लिख देते हैं, ठीक है। ये दिखता है कि CH2 Mg से जुड़ा हुआ है, बट ये भी गलत है। सम पीपल राइट इट लाइक दिस, CH3 CHOH और यहाँ पे CH3 CH2 लिख देते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा वैसे लिख दिया उन्होंने, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग।
because the attack is happening from which carbon atom? It is happening from the CH2 carbon. So can we write it as C2H5 like it's? You can write C2H5 also, but C2H5 में ये होगा कि you can directly write it like this: H3 carbon CH OH C2H5. This is fine. ये दोनों सही है. All of you done? Yes or no? Please tell me. So can you explain this reaction again? This reaction, okay, see. What's happening here is the same thing which is happening, lekin the point of attachment is that this carbon atom, okay, this carbon atom will get the delta negative charge, na? This magnesium atom is what? It is a metal. It has a tendency to lose electron. That is why this carbon atom will get delta negative charge. So this is something which can attack on the carbonyl carbon of the aldehyde. And then the reaction is going to take place as it is. Baki sara reaction same hai. But point of attachment of this carbonyl carbon will be with CH2 and not CH3. So ये समझाने का मकसद है. That CH2 is more electron rich, that is going to attack on the carbonyl carbon, not the CH3 part. And this CH2 is attached. अब जैसे CH3 पर CH2 CH3 और CH2 CH3 में कुछ फर्क थोड़ी ना है. यहाँ पे बस ये कार्बन आइटम 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है. Here it is attached with 2 hydrogens and एक हाइड्रोजन से नहीं जुड़ के किससे जुड़ा हुआ है? CH3 से जुड़ा हुआ है. ठीक है. So CH3 सारा का सारा अटैच होता है, उसी तरह से CH2 CH3 भी सारा का सारा अटैच होगा. Got this? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Okay. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Done everyone? अरे भाई जल्दी बोलो हाँ या ना. Yes, sir. Right, next. Third case. Third example. So this is ketone. It is reacting with cyclopentyl MgBr. ठीक है. अब भाई ये देखिए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स देख के घबराना नहीं है आपने, है ना. और नेक्स्ट स्टेप में आपने वाटर इस्तेमाल कर लिया. नाउ प्लीज सी व्हाट इज गोइंग टू अटैक समथिंग फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब यहाँ पे आपके पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5. तो चैट में बताइए which carbon is going to attack on the carbonyl chat में. All of you guys please tell me in the chat which atom is going to attack on the carbonyl carbon. 1 2 3 4 5 में से कौन सा अटैक करेगा? ताबिश सही है, बाकी लोग बताएं. इरम, मदीहा, तारिफ आंसर देना, जल्दी आंसर दे. जो जिनको समझ में आ रहा है, जो भी पुराने कंसेप्ट से कुछ तो समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट आई होप कुछ तो समझ में आना चाहिए. यस रबा, वेरी गुड, करेक्ट. आंसर कीजिए. यस शाहिद, वेरी गुड, करेक्ट, सही है. बाकी इरम नहीं आ रहा कुछ? इरम हाँ ठीक है ना. मदीहा नहीं आ रहा आपको? मदीहा, यस वेरी गुड. हाँ तो ये इंस्टिंक्ट पैदा कीजिए आप लोग, ठीक है ना, कि अटैक कहाँ से होगा. और जहां से अटैक होगा वही चीज क्या यहाँ पे अटैक हो, मतलब सॉरी, जहां से अटैक होगा वही चीज अटैच हो जाएगी. ठीक है. ध्यान सुनिए, प्रोडक्ट बनाना कितना आसान है. प्रोडक्ट बनाना कितना आसान है. आपने ये बना दिया ऐसे, ये तो OH हो जाएगा, हाँ या ना बताए. सही है गाइस. Carbonyl carbon will become OH, yes or no? Yes, sir. And also this carbon will get what? बस समझ में आई बात सबको, हाँ या ना जल्दी बताएं. किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोले. ये क्या हो रहा है? दिस कार्बन इज गोइंग टू अटैक लाइक दिस. अब ये अटैक हो जाए, अटैच हो जाएगा, बस खत्म बात. Mg हट जाएगा, कुछ तो ही ना होता. और जो चीज Mg से अटैच है वही चीज पूरी की पूरी उठ के किससे अटैच हो जाती है? कार्बोनिल कार्बन से. राइट द फोर्थ वन.
Let us suppose you have double bond O प्लस MgBr कुछ इस तरीके से है। सेकंड स्टेप में आपने डाल दिया पानी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको क्या बना लीजिए, OH बना लीजिए। और दिस कार्बोनिल कार्बन, इसमें कौन अटैच हो जाएगा, ये वाला कार्बन है ना। तो आपने एक बॉन्ड बनाया, अटैच हो गया। अरे सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. All of you done, yes or no, please tell me. Yes, sir. Sorry, this will be MgBr. सेकंड स्टेप में पानी। इस कार्बन में सबसे पहले आप डाल दीजिए OH, एंड देन 2 कार्बन्स, 1 और 2 बस, है ना। ये जो आपके पास है, सॉरी, ये कार्बन यहाँ पे है, और अगर आपको चाहिए दिस कार्बन, कार्बोनिल वाला यहाँ पे है। सबने लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताएं। हमने लिख लिया भाई, क्या लिख रहे हैं अभी तक। चलिए राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Finish. हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेनल, प्रोपेनॉल सॉरी, टू प्रोपेनॉल। ठीक है, सबसे पहले बताइए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल एंड टेल मी वेदर इट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। प्रोपेनॉल क्या है, देखिए, बिकॉज the type, whatever aldehyde or ketone you are going to use, it is going to depend on the alcohol. If it is primary, we will use formaldehyde. If it is secondary, we can use any other aldehyde. If it is tertiary, then we are going to use ketone. है ना, because you have been given a Grignard reagent. ये क्या है आपके पास? This is a Grignard reagent ना, ethyl magnesium chloride. So tell me in the chat, all of you guys, जल्दी जल्दी बताइएगा, लेकिन प्रोपेनॉल इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और बताइए, प्रोपेनॉल इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री।
बन गई? हाँ सही है, वेरी गुड। एरम सही है, शावेज, रबा, यस वेरी गुड, प्राइमरी है। तो बताइए व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज कीटोन, एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड? व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? फॉर्मल्डिहाइड। बस, बहुत आसान है ना। फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद पानी भी इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यू हैव टू राइट। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड विल बी CH3CH2। ये हो गया क्या, इथाइल मैग्नीशियम एंड क्लोरीन प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCHO, है ना। आप खुद से भी रिएक्शन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में पानी डाल दीजिए, यू विल गेट व्हाट, प्रोपेनॉल, CH3CH2CH2OH। तो समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? Can you explain? डन ना? Can you just explain, sir? कैन आई जस्ट डू व्हाट, सॉरी? Explain. क्या एक्सप्लेन करें हम इसमें, आप खुद रिएक्शन कीजिए। नहीं समझ में आया आपको? शाविज देखिए, जो सवाल पूछे ना वो कम से कम इतना तो डिसेंसी रखे कि माइक ऑन करके रखे ना। जी शाविज। हाँ, प्रोपेनॉल क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? 1 degree. तो 1 डिग्री के लिए क्या यूज करेंगे बताइए? Formaldehyde. बस फॉर्मल्डिहाइड ही तो यूज किया ना। अब क्या होगा यहाँ पे, दिस CH2 इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, है ना। और ये O क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन के पास तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, और क्या अटैच हो गया, CH3CH2 अटैच हो गया। और समझ में आई? Okay, yes, yes. ठीक है, चलिए अब देखिए 2 सवाल है NCERT के। So how are the following alcohols prepared by reaction of suitable Grignard reagent on methanol? आपको तो एक बता दिया क्या यूज करना, मीथेनॉल। मीथेनॉल कुछ नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड ही है। मेथ मतलब एक कार्बन, अल मतलब डबल बॉन्ड O, तो हाइड्रोजन इधर, इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिस इज नथिंग, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड ओनली। यू हैव टू सजेस्ट अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या सजेस्ट करना है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डन एवरीवन, यस नो प्लीज टेल मी। ऊपर वाला लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, अरे sir. बोलो, Yes, sir. ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। एवरीवन इज लिसनिंग वेरी केयरफुली, यस नो प्लीज टेल मी। अरे बोलो भाई, ठीक है। when you are using methanol, please see that ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के पास तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। now what are these carbon and oxygen in the product? ये फ्रैगमेंट करेक्ट है गाइस, yes or no please tell me। Yes, sir. you already have this। अब बहुत ही ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्शन है बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन है, क्या ही बताएं आपको, मतलब नजर होनी चाहिए आपके पास। ध्यान से देखिए, अगर आप ये जो हमने आपके पास मान लीजिए पिंक में किया है, ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर, सही है हाँ या ना, देख लीजिए, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए ये CH3CH2 कहां से आ रहा है, इसको हम कर देते हैं लाल। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. सही है। अब कौन बताएगा पानी कहां से आ रहा है, सॉरी ये तो हमने आंसर ही बता दिया। ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, पानी से आ रहा है। कहां से आ रहा है, पानी से आ रहा है ना, Yes. ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, when you have methanol और formaldehyde, then इतना फ्रैगमेंट कहां से आएगा, फॉर्मल्डिहाइड से आएगा। कौन सा फ्रैगमेंट, CH2OH। now if you look at these structures here, यहाँ पे आपके पास इतना फ्रैगमेंट, दिस फ्रैगमेंट इज कमिंग फ्रॉम वेयर, methanol, दिस फ्रैगमेंट इज कमिंग फ्रॉम वेयर, methanol। ऑल ऑफ यू गॉट दिस, yes or no please tell me। Yes, sir. अब बचा हुआ पोर्शन क्या है, बचा हुआ पोर्शन, इतना पोर्शन बचा हुआ है, ये कहां से आएगा, Grignard reagent.
अरे बोलो भाई, बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या? मदीहा, इरम, तारीफ, रबा, शावेज, शाहिद. This part, green part will come from where? Grignard. समझ में आ रहा है ना? तो what will be the Grignard region? As it is बनाइएगा बिल्कुल, as it is CH3, CH, CH3. In place of CH2, CH you will have MgBr या MgCl. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes. ये पहले वाले का Grignard region बन गया. सेकेंड वाले का Grignard region क्या हो जाएगा? This portion will be coming from Grignard region. तो बना लीजिए बस. MgCl कर लीजिए. अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इरम, मदीहा, तारीफ, रबा, शाहिद, शावेज सब बताएं. Yes, sir. इरम आया आपको? Yes, BR sir. and CL top again, like why are getting BR there and CL here? Sorry, what? Like, can you explain MgBr and MgCl why we are getting? We are not getting MgCl and MgBr. अब तो शुरुआत से आई होप सुन रही हो. हम ये कह रहे थे, व्हाट इज द क्वेश्चन? डिड यू रीड द क्वेश्चन? एक तो देखिए, जो भी प्लीज सवाल करे माइक ऑन कर लिया करे. बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है आप लोगों से. थैंक यू वेरी मच. डिड यू रीड द क्वेश्चन रबा? Yes, sir. व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? Like suitable Grignard region हाँ, you have to give a Grignard reagent which will react on what? on methanol. 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 Methanol ना? Methanol is what? Formaldehyde only. Yes, sir. Yes, ठीक है. Now, from the previous reaction, I showed you that what portion is coming from the Grignard reagent. If I have, see, आपके पास alcohol है. Okay. What you already have, you have the. Please keep your mic on. Yes, sir. Thank you very much. You already have an alcohol. You have to tell a suitable Grignard reagent to prepare this with reaction with methanol. Now I told you what part is coming from methanol. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. So the remaining part will be coming from. Grignard ये है ना region. remaining part. कहाँ से आ रहा है? Grignard region. Got that? Yes or no? Tell me. Yes, sir. कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आपको ये सवाल है कि सर यहाँ पे Br क्यों है और ये Cl क्यों है, ये सवाल है क्या आपका? Yes, sir. अरे भाई, तो थोड़ा ऐसे बोलिएगा ना. Br कहाँ से आ गया, तो ही ना बोला जाता है. सर why it is Br and why it is Cl, आप उस पोर्शन पे सवाल कीजिए ना. कोई फर्क नहीं, हाईलाइट होना चाहिए ना. Grignard reagent is what? R, Mg, X. What is X? It's not mentioned here. Halogen. क्या है X? Halogen है. क्या है? Halogen. Okay, halogen. Yeah. अच्छा, halogen क्या क्या होता है बताइए? What are halogens? Chlorine, bromine, fluorine, and iodine, right? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऐसे याद करिए. उसके बाद एक होता है एस्टेटीन भी होता है, याद करने के लिए. फिर कल बाहर आई आंटी. एक बार बोलिए रबा. So can you repeat again? फिर कल बाहर आई आंटी. फिर कल बाहर आई आंटी. Okay. याद रहेगा? Yes, sir. Inshallah. थैंक यू वेरी मच. चलिए, प्लीज राइट दिस डाउन. लेट मी नो वंस यू आर डन. All of it in yes or no, please tell me. Yes. चलिए, log in to your mobile app and see, there you will see method preparation by carbonyls or something like that. The test will be activated. देखिए, activate हो चुका है.